जय जगन्नाथ व्यूअर्स वीडियो रो लास्ट पार्ट रे हम डिस्कस करथिले अबाउट वेरियस एजुकेशनल कमिशंस और कमिटी ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इंडिपेंडेंस पूर्व आमर को कमिटीज एंड कमिशन सब आसीथिला रिलेटेड टू एजुकेशन से विषय हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस करछे। आज रो वीडियो रे ता रिलेटेड किछि क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करबा जोटा कि आपनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। ओके सो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो एंड मेक श्योर आपण माने क्वेश्चन अटेंड करबा पूर्व पार्ट 1 टा श्योर देखि के आसंतु सो दैट आपण को इजी होबो क्वेश्चन नो आंसर प्रैक्टिस करिया पाए। ओके एंड इन फ्यूचर आपण जदि बीएड एंट्रेंस एग्जाम दउचंती इग्नो बीएड रो एंट्रेंस एग्जाम दउचंती और इंटीग्रेटेड बीएड आपणकर स्टेट बीएड हो ओडिशा स्टेट बीएड पई जदि दबा को जाउछंती एंट्रेंस और इग्नो हो किंबा आगो को और भी आमर ओसुरु भी आसुची इग्नो बीएड एंट्रेंस हो और आपण जदि आईटीपी अंडर रे इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस दबा पई भी जाउछंती ताहेले भी ए सब क्वेश्चंस आपण को पई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। सो स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन इज हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड इन। तो प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी हम डिस्कस करि छे जे हंटर कमिशन आपनकर केबे आस्तिला 1882 रे। ओके कहि देतिले मु जे आमे माने जदी मन नाही तो टिके मु जस्ट ब्रीफली मन पके दोची हमर को एक्ट बा को कमिटीज केबे आसीथिला आपण माने जस्ट 1813 ने फर्स्ट आसीथिला आपनकर चार्टर एक्ट देन आपनकर 1835 रे आसीथिला माकुलेस मिनिट्स देन 1854 रे आसीथिला आपनकर वुड्स डिस्पैच्ड देन आसीथिला 1882 रे आपनकर आसीथिला हंटर कमिशन जोटा कि ए क्वेश्चन रहिचे देन आपनकर 1902 रे आसीथिला राले कमिशन देन 1904 रे आसीथिला आपनकर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट देन 1917 रो 19 आसीथिला आपनकर कोन ना सैडलर कमिशन देन 9th रे आस्तिला आपनकर 1929 ने आस्तिला आपनकर हर्तोज कमिटी एंड सबडो लास्ट दैट वाज इन 1944 सर्जन प्लांट। ओके जोटा कि हमर इंडिपेंडेंस पूर्वरो लास्ट प्लान थिला। ओके तो टिके ब्रीफली हमें मन पके देले एतिको आपन को मन रखिया पई पड़िबो। ओके सो हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड इन 1882। Come to next question, that is hunter commission mainly focus on। एटा भी हमें डिस्कस करथिले जे हंटर कमिशन कहा ऊपरे फोकस करूछि बोली कि ठीक अछि हंटर कमिशन आपनकर कहा ऊपरे फोकस करूछि बोली कि हमें डिस्कस करथिले। तो हंटर कमिशन आपनकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऊपरे मोस्टली आपनकर प्राइमरी एजुकेशन ऊपरे फोकस करथुला। ओके प्राइमरी एजुकेशन ऊपर फोकस करूथिला देन लोकल बॉडीज टू मैनेज लोकल बॉडी को सब अपॉइंट करथिला टू मैनेज द प्राइमरी एजुकेशन। ओके का परे काहा को अपॉइंट करथिला लोकल बॉडी को। ओके सो हंटर कमिशन का पर फोकस करथिला प्राइमरी एजुकेशन ऊपर। देन कम टू राले कमिशन आपनकर काहा ऊपर राले कमिशन वाज रिलेटेड टू आपनकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ओके राले कमिशन हंटर कमिशन आपनकर कहा पर थिला प्राइमरी एजुकेशन ऊपर एंड राले कमिशन आपनकर थिला केबे कहा ऊपर ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऊपर। राले कमिशन केबे आस्तिला आपनकर 1902 रे। ओके देन राले कमिशन लेड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ओके 1904 को इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैडलर कमिशन इज आल्सो नोन एज। ओके सैडलर कमिशन इज आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सैडलर कमिशन इज आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन। ओके जो थरे आपनकर 12 ईयर ए कमिशन सैडलर कमिशन ने आपनकर कोन थिला ना 12 ईयर स्कूलिंग थिला एंड 12 ईयर स्कूल रे 3 इयर्स डिग्री सिस्टम थिला। 12 ईयर स्कूल थिला
then 3 year degree system thila. Okay, then come to Sadler Commission recommended. देखो Sadler Commission recommended separation of intermediate education from universities. एटा मन रखिबे Sadler Commission आपनकर 12 year school system करिथिला, ठीक अछि, तापरे 3 year डिग्री कोर्स करथिला, ता सहित सेपरेट इंटरमीडिएट एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोलिया पई चाहिथिला. Then come to Hartho's committee was appointed as. Direct question. Hartho's committee was appointed in 1929. Next question asila. Hartho's committee emphasizes. Hartho's committee emphasized. Hartho's committee कहा पर emphasize करतला? Quality of education डे. Okay, quality of education डे Hartho's committee emphasize करूथिला. आउ कोन करथिला? आउ कोन करथिला? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आ गोटे भी आसीबो आपनकर व्हिच कमिटी emphasized on quality over quantity. This is also an important question. Okay, so that was Hartho's committee. Next come to Vardha scheme of basic education is also known as. Very important question. Vardha scheme of basic education which was proposed by Mahatma Gandhi. ठीक है, मन पकई दियंतु. फर्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करथिले महात्मा गांधी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थिला को ईयर पर्यंत आपनकर 7 ईयर पर्यंत. 7 ईयर पर्यंत एठी आपनकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थिला. देन आकु कोन कहवा जाउतला? नई तालीम. देन आकु कहवा जाउतला नई तालीम. The Vardha scheme of basic education is also known as Nai Talim. That means learning through craft. Okay, यार मीनिंग होची कोन? Learning through craft. एबे गुटे क्वेश्चन हे परिबो, नई तालीम रा मीनिंग कोन? Learning through craft. Okay, come to next question. The Vardha scheme was proposed by, already we have discussed, Mahatma Gandhi. Then Vardha scheme emphasized on craft based education. एबे हमें डिस्कस कले नई तालीम रा मीनिंग होची. Then sergeant plant was introduced in 1944. एटा थिला हमर कोन ना before independence. This was the last plan. Then sergeant plant recommended. कोन recommended करथिला? Universal free and compulsory education from 16 to 8. Free and compulsory education, that is from 6 to 14 years. Okay, आउ कोन करथिला ना improve teacher training मध्य. Improved teacher training. Pre primary education मध्य. Okay, तीनटा अंगार important. एटा free and compulsory education and teacher training was teacher training. Then pre primary education also. Primary education हमर आस्थिला कोथरे हंटर कमिशन ने, and pre primary एम सब कंपेयर करके पढंतो. pre primary आस्थिला आपण मानकर sergeant plant. Which committee focused on reducing wastage and stagnation in primary education? That is Hartho's committee. Okay, answer is your Hartho's committee. तो Hartho's committee विषय रे हम जदि आ टिके अधिका करबा, तो just before 1 to 2 questions we have discussed that एटा केबे आस्थिला हमरो 1929 ने आस्थिला. Focus on quality over quantity बोली already कहि सारिछि. Improvement in primary education and reduction of wastage and stagnation. Okay, so आपन को जदि क्वेश्चन आसिला which committee focused on reducing wastage and stagnation, that is your Hartho's committee. एबे हमें जिबा टिके जोडा का आपनकर PYQ question आसीछि. Okay, the development of education under British rule started with. देखंतु development of education was started with Macaulay minutes. हमें जानिछे Macaulay minutes रो स्टार्ट हेतिला, was started with Macaulay minutes. Okay, केबे 1835 रे. Okay, then come to next question. एटा भी PYQ थिला आपण मानकर बीएड क्वेश्चन. ओके, एटा आपनकर स्टेट बीएड एंट्रेंस रो क्वेश्चन 2024 रो.
which of the following recommended the establishment of the first modern universities in India? Question बुझी होची which of the following recommended establishment of first modern university in India का द्वारा आसीतला वुड्स डिस्पास द्वारा ओके कौन थिला कोड कोड थिला आपनकर यूनिवर्सिटीज फर्स्ट पार्ट रे ऑलरेडी मु बतैछि कौन यूनिवर्सिटीज थिला कौन यूनिवर्सिटीज आपन मन थिला तीनटा जगह रे कहितली कलकत्ता गोटे बॉम्बे गोटे एंड आ गोटे कोठी मद्रासा ओके कलकत्ता आ गोटे हला बॉम्बे नेक्स्ट वाज योर मद्रासा then come to next question which of the following commissions recommended for establishment of UGC in India अच्छा एटा आपनकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आसीबो जोटा कि आपनकर पोस्ट एजुकेशन पार्ट रे आसीबो ठीक अछि क्वेश्चन ता जदी देई देइछि आपण देखि दियंतु एटा पोस्ट इंडिपेंडेंस हम एटा डिस्कस करबा नेक्स्ट वीडियो रे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिशंस और कमिटीज इन इंडिया ओके पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमिटीज और कमिशन ने हमें डिस्कस करबा जे यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो थिला हमर कमिशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948 रु 49 जोटा थिला अकॉर्डिंग टू दैट सेटा रे रेकमेंड हेतिला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमिशन ओके एटा आपनकर आउटे क्वेश्चन हे पड़े जे यूजीसी केबे एस्टैब्लिश हेतिला दैट वाज 1956 एटा भी बेले बेले बीएड एंट्रेंस रे इग्नो बीएड एंट्रेंस रे आसी थिला थरे देन अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ 1833 लॉर्ड मैकुले वाज अपॉइंटेड एज ओके लॉर्ड मैकुले को हिसाब रे आपनकर जेतेबेले 1833 थिला मैकुले मिनिट्स आसिया पूर्वरु लॉर्ड मैकुले कोन थिले ना लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉ मेंबर थिले ओके लॉ मेंबर ऑफ ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया देन सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैकुलेस मिनिट इन 1934 which of the following system of education was supported by him obviously western education then come to in the order 1813 okay 1813 ने हमर जेतेबेले चार्टर एक्ट आसिला सेतिरे गोटे वर्ड थिला लिटरेचर so what does that literature was mean that was english literature means english literature then come to next question as used in order of 1813 that means charter act indian scholar implies तो सेतेबेले इंडियन स्कॉलर कहिले इंडिया रे जो शिक्षा व्यवस्था प्रणयन करा गला तार सेथिरे जति गोटे इंडियन स्कॉलर को होउची बा सेही पाठ पढि सल्ला परे जति जने एजुकेट होउची ताको इंडियन स्कॉलर को होउची तो दैट इंडियन स्कॉलर इंप्लाइज व्हाट से इंडियन स्कॉलर कोन तार मीनिंग होतला कोन ना एन इंडियन स्कॉलर हु इज लर्नड इन इंग्लिश ओके इंडियन स्कॉलर बट जे के एटी मु छाडी देइची एटिके कटि जाइची इंडियन स्कॉलर who is learned in English रे पढ़ी थिबा भारतीय ओके so Indian scholar means English रे पढ़ी थिबा भारतीय so Indian scholar who is learned in English not in Sanskrit or Parsi so ए सब थिला आपण मानक पई किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि रिलेटेड टू प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमिटीज और कमिशंस in the next part we'll discuss about the post independence educational committees और commissions ता विषय भी थ्योरी डिस्कस करिबा एंड ता रिलेटेड किछि क्वेश्चन मथन डिस्कस करिबा ओके वीडियो टी भल लागिथिले निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे।